Good morning, class 10. Bete, in history lesson 2, we have already done the last topic, that was the sense of collective belonging. Now we are going to discuss one box given in the book on page number 49. That is the topic Quit India Movement, जिसको भारत छोड़ो आंदोलन भी कहते हैं. Just see, यहाँ पे लिखा हुआ है August 8, 1942. So on August 1942 in Bombay, all Indian Congress Committee passed the resolution, right, where they started the mass struggle, and that was the call for the Quit India movement, right. भारत छोड़ो आंदोलन भी कहते हैं इसको, जहाँ पे महात्मा गांधी ने एक स्लोगन दिया, that is do or die, right. Now let's begin. After the failure of the Cripps mission and the effects of the Second World War, it created the widespread discontentment in Indians. थोड़ा सा समझ लीजिए क्रिप्स मिशन क्या था. सी द बॉक्स गिवन इन योर बुक. इस बुक पेज को देखिए बेटे. द फेलियर ऑफ द क्रिप्स मिशन यहाँ पे लिखा हुआ है. तो क्रिप्स मिशन ने जो क्या था, दैट वाज हेडेड बाय द स्टैफोर्ड क्रिप्स, right, that was the name of the person, Stafford Cripps, who was the head of the Cripps mission. And they promised that after the war, the steps would be taken to set up an elected body with the task of making the constitution, right. But due to the failure of that, they went back to England. और उसके बाद गांधी जी ने लॉन्च की मूवमेंट, जिसको कहते हैं दैट इज़ कॉल्ड क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसमें उन्होंने कहा फॉर द कंप्लीट विड्रॉल ऑफ ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया. व्हाट ही डिमांडेड? द कंप्लीट विड्रॉल ऑफ ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया. The Congress Working Committee in its meeting in Wardha on 14 July 1942 passed a historic Quit India resolution. Right, तो ये Quit India resolution किसने पास किया? That was the Congress Working Committee. डिमांड क्या की? Immediate transfer of the powers to Indians and quit India. Right, जो इंडियंस हैं, इंडियन को उनकी पावर्स, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन दी जाए, और जो ब्रिटिश हैं they should quit the India. Now on 8th August 1942, just see, on 8th August 1942 in Bombay, the All India Congress Committee, what is the name? This is the All India Congress Committee, endorsed the resolution which called a non-violent mass struggle. तो एक रेजोल्यूशन पास किया गया, एक प्रस्ताव पास किया गया, जिसमें किसकी डिमांड की गई कि अब जो कांग्रेस है, ऑल इंडियन कांग्रेस है, महात्मा गांधी हैं, वो क्या स्टार्ट करेंगे? नॉन वायलेंट मास स्ट्रगल, राइट, where there is no room for violence, no bloodshed, on the widest possible scale throughout the country. It was this occasion that Gandhiji delivered a famous do or die speech, right. तो महात्मा गांधी ने एक स्लोगन दिया, एक स्पीच दी, दैट इज़ द डू और डाई. एंड द कॉल फॉर क्विट इंडिया almost brought the state machinery and stand still in the large parts of the country. तो बहुत सारे लोगों ने इसमें पार्टिसिपेशन रहा. People जो हैं voluntarily they participated in this movement, and people observed. Now these are the steps. What was people participation, right? First, they observed हड़ताल्स. नेक्स्ट नंबर 2, डेमोस्ट्रेशंस की गई. नंबर 3, प्रोसेशंस किए गए, कैंपेन्स की गई. वर एकम्पनीड बाय द नेशनल सॉन्ग्स एंड स्लोगन्स, राइट. हमने वंदे मातरम की बात करी थी, अभी स्लोगन की बात करी, डू और डाई. वहीं पे जो सुभाष चंद्र बोस हैं, उन्होंने भी स्लोगन दिया, दिल्ली चलो, राइट. बहुत सारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, दे वर पुट बिहाइंड द बार्स. The movement was truly a mass movement which brought into the ambit thousands of ordinary people, namely students, workers and peasants. तो ये mass movement थी. There was massive participation of the student, workers and peasants also. Next, it also saw the active participation of the leaders. Right, अब आप कुछ active participation leaders के नाम याद रखेंगे. Namely, they were the Jayaprakash Narayan, then Aruna Asif Ali and Ram Manohar Lohia, right. So these were the active participants of the Quit India movement, along with हमने बात करी महात्मा गांधी, right. And many women, now keep in mind the name of some women also, such as Matangini Hazara in Bengal, then the Kanaklata Berua in Assam and Rama Devi in Odisha. So these are the 3 women who actively participated in the
क्विट इंडिया मूवमेंट. और वहीं पे जहाँ पे बात आई अभी, दिस इज़ दी कनकलता जी. तो इनको दे वर शॉट डेड बाय द ब्रिटिश पुलिस ऑल्सो, राइट, व्हेन शी वाज होल्डिंग दी स्वदेशी फ्लैग. Same way that was happened with the Matangini Hazara, right? They were put behind the bars, they were being caught by the police and shot dead also. After that, the British responded with much force, yet it took more than a years to suppress the movement. तो वही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने brutally suppress किया इस movement को. And after that, you know that up to 1947 that movement was going on, and after that India got the independence.